Hello children, today we will be studying about plasma. So this video is on plasma. It is in continuation to the last video in which we discussed about the blood and the composition of blood. So here we will be discussing about plasma. As you know, plasma forms 50 to 55 to 60% of your blood. 55 to 60% of your blood. Now what is plasma? It is a light yellow, or you can say pale yellow colored fluid, and it is slightly alkaline in nature. Slightly alkaline. It is light yellow colored fluid. It is slightly alkaline. इसके characteristics में भी हम लोग ये लिख सकते हैं कि it is a fluid part of blood. Okay, it is pale yellow or light yellow in color. It is alkaline in nature, and it contains water, proteins, inorganic salts, and other substances. This I told you in last video also. Here I am doing it a little bit in more details. So water का main functions क्या है हमारे body में? Water acts as a solvent. हमारे बॉडी में जितना भी रिएक्शंस होता है पानी में, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ऑल ऑफ यू नो दैट. सो इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड सॉल्वेंट. वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत हाई है, तो वो बहुत सारा हीट अब्जॉर्ब कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है और रिलीज कर सकता है. सो इट अब्जॉर्ब्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड रिलीजेस हीट. Okay, and it also acts as a suspending medium for blood cells, suspending medium for the solid components of blood. जितना भी ब्लड के सॉलिड पार्ट है वो सब पानी में डिसॉल्व रहते हैं. सो इट एक्ट्स एज अ सस्पेंडिंग मीडियम, वी कैन से. Albumin, globulin and fibrinogen. As I told you in last video also, these are the three main proteins found in plasma. But other than this also there are many other proteins. Proteins form almost 7%. Water is 91.5%, as I told you. And the solutes, माने inorganic salts और other substances, दोनों मिला के 1.5%. ओके, सो एल्ब्यूमिन का मेन फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में? ये हमारा ब्लड वॉल्यूम रेगुलेट करता है. एल्ब्यूमिन, इफ यू माइट हैव सीन द एग योक, इट इज फाउंड इन एग योक. इट रेगुलेट्स ब्लड वॉल्यूम एंड इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर. ओके, ग्लोब्यूलिन एक तो प्रोटीन ग्रुप है जिसको एंटीबॉडीज बिलोंग करते हैं. ठीक है, ऑल एंटीबॉडीज बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन विच आर नोन एज ग्लोब्यूलिन्स. Other than this, you have fibrinogen. They help in blood clotting. Everyone knows. Now, blood clotting, so it is a very important clotting factor. It is कुछ ना name the clotting factor present in blood, then you will say fibrinogen. Now plasma, if you see children, plasma को अगर हम लोग थोड़ा सा blood लें, not plasma sorry, अगर तुम लोग थोड़ा blood लो और उसको एक टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज करके रखो, तो एक मशीन होता है सेंट्रीफ्यूगल मशीन, वहाँ पे अगर ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कर दिया जाए और फिर उस टेस्ट ट्यूब में ट्रांसपोर्ट किया जाए, ओके, सेंट्रीफ्यूज्ड ब्लड, then we'll see that the blood separates into two parts. The one is the liquid part, which is clearly seen above the yellow part, and the cellular part जिसमें सारे cells नीचे आके इकट्ठे हो जाते हैं. This is your cellular part. इसमें these are nothing but corpuscles. Corpuscles यहाँ पे belong करते हैं, and this is nothing but the yellow fluid, that is your plasma. So plasma belongs to this part. So now this
this plasma has a clotting factor, that is fibrinogen. So if you remove fibrinogen from plasma से अगर fibrinogen हटा दिया जाए, then what we will get is called serum. Serum does not clot. प्लाज्मा और serum में क्या डिफरेंस है बच्चों? कि plasma can clot but serum cannot clot. Why? Because it doesn't have the clotting factor. It doesn't have fibrinogen. Plasma has fibrinogen. Serum does not have fibrinogen. Okay? Differences can come between plasma and serum. Other than this, the inorganic salts that are present in our plasma are sodium chloride and sodium bicarbonate. NaHCO3 sodium bicarbonate और sodium chloride, ये Na plus ions, Cl minus ions और HCO3 minus ions में टूट जाते हैं. So you can also write ions instead of salts. These are found in plasma. And other substances, there are lots and lots of other substances found in plasma, as you know, that chini, glucose, amino acids, lot of hormones, urea, and many other stuffs are found in plasma. So this was all about plasma. In the next video, I will take up the formed elements. Take care. Bye bye.